Hello all, welcome to Law School. Today we are going to discuss a very important scheme, that is Agnipath scheme 2022. Right? As you all know, this is a very transformative military scheme which has been introduced by Union Cabinet on 14th of June. This scheme that is saying that they will recruit 46,000 soldiers in the Indian army, right? And that again, इतने तो कर रहे हैं, but for what period of time? For a very short period of time, that is just for 4 years. So the recruitment period will be of 4 years. And under this scheme of Agnipath, this says in Indian army, the latest scheme of the government of India to recruit soldiers before the rank of officers in the armed forces. अब आप पूछोगे कि मैम armed forces में क्या क्या? तो armed forces में इनको 3 जगह रिक्रूट करना है. That is in the Indian army, Indian Navy and Indian Air Force. So 46,000 youth will be recruited in the different departments of the armed forces of India. Right? Now, who are Agniveers? अग्निपथ स्कीम तो हमने समझ ली ये क्या है, बट हु आर अग्निवीर्स? अग्निवीर्स in this scheme are the youth of the country who are between the age of 17 and half to 21 years, right? And now 21 years पहले बोला, now this is being revised to 23 years. So yes, here comes your first question. आपका ये क्वेश्चन अगर अग्निपथ स्कीम से आता है आपके एग्जाम में, तो पहला ये आएगा 17.5. आपको याद रखनी है द बिगिनिंग एज 17.5, 17 एंड हाफ. ओके, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं, हमेशा हमने 18, 19, 20, 21, बट 17.5 जस्ट फोकस टू रिवाइज्ड क्या है अब 23 इयर्स ऑफ एज. और कौन कौन हो सकते हैं इसमें? गवर्नमेंट सेज फीमेल एंड मेल्स. So as such there is no reservation given. तो जैसा जैसा कोई क्लियर करेगा उस अकॉर्डिंग फीमेल्स एंड मेल्स को वो रिक्रूट कर लेंगे, राइट? अब what is the purpose of Agnipath scheme? So if we see the prime focus, what is that? हम ये कहेंगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की है, तो मेन फोकस गवर्नमेंट का ये तो है सो दैट ये जो प्रोग्राम है इनका इंडियन आर्मी अग्निपथ का, टू ट्रेन यंग पीपल एंड रिड्यूस द रिटायरमेंट एंड द पेंशन कॉस्ट. So here government is cutting their pension and retirement costs. जो इतने जो देते थे, तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम ऐसे बनाई है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे यूथ को हायर करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेन करेंगे. मोस्टली उन्होंने बोला है कि मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के अंदर हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद उनकी जो जॉब की एक्चुअल वो है स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो ये क्यों करा है ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड? इसीलिए रखा है टू रिड्यूस द रिटायरमेंट एंड द पेंशन कॉस्ट्स. ओके, एंड द गवर्नमेंट डिवाइज दिस स्ट्रैटेजी टू एनहांस आवर सिक्योरिटी फोर्सेस. ठीक है ना, कह रहे हैं जोश जज्बा, इन्होंने लिटरली ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं कि हम यंग जनरेशन को इसीलिए भर्ती करेंगे बिकॉज दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू यूज द यंग फोर्सेस एज अवर सिक्योरिटी फोर्सेस इन द
army, right? They are aiming at reducing the salaries, right, and pensions to divert resources for military modernization. Okay, and it is considered as a novel concept for the modern era. Why so? Because there is no such reservations, no such quota. There is an equality. This is based on the equality purposes. Males, females both can apply for this scheme. Only there is an age bar, that is from 17.5 to 23, which is now revised from 21 to 23. Agniveers will be enrolled for a duration of 4 years. उसके बाद वो कह रहे हैं 25% of the Agniveers will be given an option कि वो रेगुलर बेसिस पे रख लें उनको, जो उनके बेस्ट से बेस्ट होंगे ना, उनको 25% को वो रेगुलर बेसिस पे रख लेंगे फॉर 15 years. Then comes the salary part that we will discuss in the other slide, and then the benefits. Benefits of course military में है, benefits मिलेंगे इनको, बहुत सारी schemes के अंदर benefits मिलेंगे, वो भी हम अभी next slide में discuss करते हैं. Now, what are the broad objectives? So, the opportunity provides the country's youth who are keen to serve the Indian Armed Forces for a shorter period, right? This program also helps in developing different qualities, skills, ये सब देखेंगे. And after the completion of the 4 years, a recruitment will be provided to the regular cadre, right? After the engagement period इनका कितना है? 4 years का. उसके बाद इनको रेगुलर कैडर के लिए भी रख लेंगे, only but 25%, right? And the selection will be based on their performance during the engagement period, right? And they say those selected in the regular cadre will be employed for 15 years, right? Now, what an Agniveer do after 4 years? They say एक तो वही 25% वाले सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकियों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये 2 स्कीम्स बताई हैं कि इनको हम फाइनेंशियल पैकेज देंगे 12 lakhs का. वो बताऊंगी उनको कैसे मिलेगा. उससे वो अपना कहते कुछ भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या कोई लोन स्कीम लेके कुछ और कर सकते हैं. इवन उन्होंने ये भी कहा है कि 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट वो भी देंगे उनको, अपनी मतलब उसकी आगे पढ़ाई के लिए उनको काम आ जाएगा. देन इवन बहुत सारी MNCs ने, IT कॉरपोरेशंस ने उनको ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि कुछ % को हम ऑलरेडी रिक्रूट कर लेंगे. इवन अलाइड फोर्सेस, असम राइफल्स एंड पुलिस में बहुत सारी स्टेट्स ने ऑलरेडी ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि 10% ऑफ द अग्निवीर्स विल बी रिक्रूटेड इन आर दीज CAPS, असम राइफल्स, पुलिस में हम इनको रिक्रूट कर लेंगे, राइट? उसके बाद ये इन्होंने ये भी बताया है कि कौन से स्किल्स, एक्सपीरियंस के ऊपर भी इनको रख सकते हैं. और ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है. दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट हायरिंग देम because they will be highly skilled and they will be highly disciplined. So yes, so many corporations and MNC would love to hire them, right? Now what is the salary package? Salary package, see, पहले साल इनको बोला है गवर्नमेंट ने कि हम 30,000 देंगे, उसका इन हैंड 21 मिलेगा. 9% जो इनका कटेगा वो एक फंड में जाएगा और 9,000 और गवर्नमेंट डालेगी. फिर ऐसे करते करते इनका 40,000 4th ईयर में देंगे, राइट? 4th ईयर में 40 देके इन हैंड 28 देंगे और 12,000 जो बचेगा वो और 12,000 गवर्नमेंट डालेगी. ऐसे करते करते जब उनका 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा 11.71 lakhs एज सेवा निधि पैकेज उनको मिलेगा और दैट विल बी टैक्स फ्री, राइट? नाउ what are the benefits and what for and advantages of this scheme? So they says they have various career options after that, and of course they will have the opportunity to retain some of them 25%, and soldiers who will be released after 4 years of service would be capable of competing in the civilian world. And then they say there are large industries and multinational corporations have already expressed
their interest in hiring Agniveers, and they say that this scheme may be beneficial for their personal development also, because army personnel, they have the discipline lifestyle, so yes, it will help in their personal development also. And this is the government is giving a great deal of money to utilize them, right? So ये थे advantages. Now what is the criticism? See, after the announcement of the scheme, there were protests going on, and what are the major criticism? They says जो select नहीं होंगे regular basis पे, they will have to struggle for the employment, and again it will be very difficult for the trained soldiers to suddenly adapt themselves in the civilian society. Then the salary is critiqued very much, because सेवा निधि पैकेज तो है, बट वो फिर भी कह रहे हैं कि कम है, और पेंशनरी स्कीम नहीं है, right? And they say soldiers on contract raises issue of permanency and dedication. It is also seen as budgetary move instead of being based on the efficiency of Indian armed forces. Now, last to conclude, what we can say, at last to conclude, we can say that let's wait how it's, so we should take it positively. Let us see how it is implemented in the coming years. No doubt they say this scheme do have gray areas, but the dots can meet, right? And if it go well, then this is the best scheme for the Indian Army, right? Even for the government, as they have tried to cut their budget by already cutting the pension and the retirement schemes. So we all can wait and see how this scheme will go on, and then we can say this is best or not. But right now we can say this is all government has decided for us in the Agnipath scheme, which was launched on 14th of June 2022. That's all for today's lecture. I hope you enjoyed it. And yes, now as I have explained you this Agnipath scheme, now your homework is read the blogs and articles in given on the Google, or you can check out the Hindu's article blog, because वो ही आपका जो है एग्जाम में कई बारी ऐसे पैराग्राफ डाल देते हैं और उस पर आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ज़रूर देखना कि जो वो ब्लॉग आपको डाला है, एडिटोरियल ब्लॉग, उसमें इन फेवर बात कर रहे हैं कि इन अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वैसा ही फिर आपको उसका जो है आंसर देना होगा। ठीक है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।